A very good afternoon to all of you. I welcome you all for today's webinar on behalf of DLF Cares. Today's webinar is on literacy, and for that we have a special guest with us, Miss Sonia Relia. Talking about Sonia, ma'am, she's a renowned educationist who has been intensively involved in developing learning aids to make learning process more interactive and contextual since past 30 years. She's the founder of Kino Learn and Kinophonics, which highlights how kinesthetic movement and hands-on activities can help facilitate learning. She has trained over 1 lakh teachers with respect to Kinophonics and Kino Learn in India, Sri Lanka, Pakistan, and the Middle East. An international, she has received her training and certification from Phonics International UK and has authored the first standalone activity-based series called as My Learning Train, which has been published by Oxford University Press India. And this has inbuilt Kino Learn teacher facilitation program for the teachers to impart their pedagogical practices. Her series, My Learning Train, has won awards in the Complete Solution for Early Years category by Indian Didactic Association in 2014 as well as 19. We are honored to have such an experienced and seasoned person with us for the workshop. Over to you, Sonia, ma'am. Thank you so much. Thank you. So it's when somebody reads my profile, I always feel that it's like a journey which has got so many people in it. And that's how it makes the journey that special. So I think more than anything else, it is the teachers, it is the interaction, it is the number of people who trust us that make the journey so beautiful. So thank you so much. And just a few days back, I was, thinking that I'm not doing as many, workshops and webinars as I used to because I'm writing the next part of my series. But, when ma'am calls, and I think there is just a certain way you just listen to her. And I think that's been her energy for the last many, many years. I've been actually very, very lucky. Somebody was asking me that, are you lucky or blessed? So I would say blessed because I meet the right people to grow. So we'll all start off and right time to go. I know the bed is gone, but now for us to start. So everybody in the classroom to have a little musical instrument that gets the children's attention. Even in the digital time, it is very, very important to have any one instrument in the classroom which you like, which is from a part of India, and you can actually create absolute magic with it. It works, it's interesting, it's nice. You can actually travel, and whichever place you go, pick up one small little tool from there. If you go to a Banaras, you go to a, somewhere in the south, you go, this is somebody had sent this to me from Africa. And so each little, instrument that comes your way is a beautiful instrument to have into the classroom. That's exactly what the NEP is asking us to do. They're not asking us to do anything very, very, difficult. It is just that if we focus ourselves and say, yes, this is how it is, it's going to make it that much easier. For the first few minutes of the session, I'll be using a PowerPoint just to take you through the whole thing. And after that, we put away the PowerPoint and we will just do a series of activities. Because when you're talking of literacy, I would just say language development, whether it is English or Hindi, also because both have to now be an essential part of our classroom, whether it is Hindi or it is Tamil or whatever is the local language, but because you are on this side of the country. So I would also address a bit of language development, which is bilingual. And that's what I'll be using in the session. I've tried to make it as intensive as and simple as possible, I mean, like in the sense that try to do a whole lot of things for you. And let me see how this goes. So yeah, I always like to store the first picture with the presentation. So I have done that. A very, very quick way to, so very interestingly, we are very close to
the 8th of September, which is the International Literacy Day. And this was done basically to raise the and remind people that there is an issue with literacy globally. It's a concern. You know, we keep feeling all the other countries are very literate and the level of, but everybody is going through struggle. Fortunately, 2020 came up with a fantastic change. And Nipun is the document which we all must read back to back. Whether your children are in class 4 and 5, but the base and the foundation of what these children have to learn comes from Nipun, and it's a very, very well done document. So I have picked up some basic things from there, and I thought I must quickly share them with you. So even right behind me, today with the parent, teacher, and child, you have a very strong connect of the digital. It's a connect which did not which kept us all connected. At the same time, it did not, when the children came back, we realized that no teacher and hands-on and interactive learning is not replaceable. So we were under this myth for some time that digital hai to sab kuch ho jayega. But the last 2 years have shown us that we only had digital. We had the teachers learning, we had adaptation, but when the children have come back, do we see problems or not? You can just actually put it in the chat box. I will follow the chats as well. So when the children come back, do we not still see issues with them? So there is a large number of digital and that. Now, if we talk of literacy, we talk of the definition of literacy, very quickly, oral language development, vocabulary, phonological awareness, much before the phonics starts. Just don't start with a, b, k, d, or all whatever we are doing, because that's not the way the children should learn. The awareness, the practices, the rhyming, the alliteration, the stories, the vocabulary, the sound symbol association, all that must precede identification, similarities, differences. And let me tell you this, if you try these activities, even with very, very grown-up children, I'll just stop this share for a couple of minutes. So we had a very interesting research which is being done by somebody who's a speech therapist. And she says that, you know, when you actually check, when you have reading difficulties in children, and you check even this, beyond third, fourth, you realize that the children don't have a good strength of phonological awareness. If you tell them very quickly, match the same things, catch the differences, spot this out, break up a word into a number of sounds. How many words does a sentence have? The children don't react very well. So that's the readiness necessity that is there when you say the literacy has to be developed from foundation, because all these difficulties that we face a little later are emerging from here, right? So it's very, very important to understand this little fact that we need to get the children prepared. And like I said, a very, very quick glance at what the objectives are. So basically effective, everything to be effective, to be low cost, to be having a certain tracking system in the school, and to have a very, very simple, affordable process which can take things forward. I think that's the whole way that we create this whole thing for literacy. The reason why I talk about Nipun is that a lot of times when I'm talking to schools, I realize that these documents are out there and nobody is really reading them or, like internalizing these documents. They're extremely well done, and I would recommend schools to actually look at it very, very seriously, right? Now, if we talk about activities and learning, that's my area of specialization, is activity-based learning. How many activities? What can you do for the setup? How can you build setup, and so on and so forth? So why activities, when activities, how activities, and what activities? I'll try and cover in short capsules of what we can share with you in this particular time. So the first step to understanding, why something needs to be done is to understand very simple things. We do it very quickly. 3 levels of the brain, the top, middle, and the bottom.
which talks about instincts, long-term memory, and intelligence. But the more important thing is this, that the brain has two sides, the left and the right. The left takes care of all the logic, numbers, sequencing, words, and the right deals with feelings, rhythms, patterns. Healthy food and brain, sleep time, the kind of television the children have been seeing is affecting the way we see, the children responding in the classroom. So one question that I would like to ask you is two sides of the brain. We all know about it. What do we concentrate on? Do we concentrate on the development of the left side or the right side? Quickly put it in the chat box and tell me. The basic curriculum of any school, any design in the present day, what is it looking at? Is it looking at the left side of the brain or the right side? Very quickly, I'm hoping for some chats to come in by the time I go on to the next part, because I want to finish all of this fast. So if you respond, I would know that, So I'll repeat the question. I'll repeat the slide actually. Let me put out the slide and repeat the question. So the question is that the brain has two sides. The left side of the brain deals with logic, numbers, sequencing, words. The right side deals with feeling, rhythm, spatial images, music, and basic creativity. Which side of the brain does the normal curriculum concentrate on? The left side or the right side? What is more, what is more prevalent in schools? All over the country, your school, generically is the question that I'm asking you. That which side of the brain are we usually? Yes, so Twinkle ma'am, be absolutely right. So if we are concentrating on the left side of the brain, how do we expect an overall development of the child? It's not going to happen. And this is going to be a repeated problem. So therefore, any part of your classroom has to have an overall development. And that is what we are going to talk about in the next 5 minutes or so. And then I'll go down to stories. I'm going to bring you a lot of storytelling techniques from different parts of India, which you can bring into your classroom, use them in different ways. Setting up of basic language boards, which are so essential for children and very, very easy for teachers to use. So we will, I will share that part with you. So we are going to talk about the 5 domains. The 5 domains are here. Okay. So I'm going to stop the share and I'm going to actually work on the board. This also will give you a very quick idea on how easy and simple it is to have pocket boards in your classroom, because they help you to explain concepts, they help you to take things forward and really work beautifully. So if I want to pick up a topic for children, for example, all I need to do is keep my board ready and then I can actually flash it rather than just the digital. I can actually distribute this. We talked about flipped classrooms, today we're talking about a flipped classroom where there is a digital, but you flip it in the interaction. So we talk about 5 domains. The first one is the social emotional domain. I've color coded them. You will understand why I color coded them when we do the activities and I mark the color codes, right? So social emotional domain is yellow in color. The language domain, which is the literacy language, is pink in color. You can choose your own colors. There is no some international standardization, but everybody then should have the same color. The sensorial domain is the world around and the creative skills. Cognitive learning is all things the child applies, not just numeracy, not just science, but anything that is application and helping the children to go forward. And you have the brown colored physical domain, which has got large muscle, small muscle, and health and safety. And because we want to keep this as a recap, because we want to be using this color code all through, I am going to put this back here so that it is visible to you and we can keep making our reference points. And that's what we will do with the session, that we keep a reference point of all these, little things that we've spoken about and then take it forward, right? Okay. The next very important part is how children learn. So each of our children have a combination of your multiple intelligences. Each one will be different, but for a class of 30, 40 to create a package that will cater to every child is difficult. So we say that, okay, try and create a series of activities
And don't worry about the theme, but worry how many domains can it be touched and what to teach. Very important to remember the learning milestones. So I'm also going to stop share here, and I'm going to ask the teachers present here, how many of you, before the year starts, go through the learning milestones that the children are, milestones are the standard, indicators of every age group. So how many of you actually sit down and research those milestones before the session starts? See, this is any training we do, any facilitation we do is also sometimes just as a reminder, that we need to be doing this or have we done this? So how many of you go through the milestones, whether it is in 3 years, 4 years, 5 years, 10 years, 12 years, everything has learning milestones. How many teachers read that milestones chart every year before starting the academic session? Just quickly tell me. I'm waiting for you all to type it in, please. चलो बैठ जाओ ज्यादा जल्दी सुनिए कुछ करके नहीं How many of you go through the learning milestones of every stage? Okay, teachers, I'm waiting for you. How many of you actually, go through the learning milestones meant for your class before you actually set your design for the year? Great. Ankita says she does. This is just a suggestion to everybody. Every single teacher in the classroom must have learning milestones taken care of. And how many of you go through the learning milestones before and after your children? So why do you need to know before and after? So when you're going to be looking at your children's milestones and they have not reached a particular level, it's very, very important to know the before and after. They say it's critical so that you can set your next rhythms for your classrooms. I think that's the reason why. So I've got two answers saying that yes, I do. I hope all of you do, because it's an important thing to talk about, important to actually go through. Very, very important that all learning milestones are taken care of. And you also know that if for the next year and the year before, so that when you say exceeds learning expectations, that means these are children who are very, very independent and actually can be using other activities. Now, when you see children who are doing more than their milestones or less than their milestones, it's very difficult to change the academic setup of a classroom. The lesson, the question answers, the worksheets are not easy to set up, if I'm right. So what we suggest is you make levels of activities. So your activity can be the one that has got the higher level of activities and slightly simpler activities. So you can have 3 levels of activity design in the classroom. It is much simpler than making different worksheets and material, etc. for the children. One, yes. Yes. Okay. So it's very, very important that we actually take care of that part of it. यानी कि अगर हमारे बच्चों को हाई लेवल थोड़ा सा ज्यादा काम आता है या थोड़ा सा कम आता है, हम उसको माइलस्टोन्स देखकर उसको हम डिसाइड करेंगे कि हम कितने लेवल्स की एक्टिविटी करें, क्योंकि वर्कशीट्स बनाना और हमारे लिए any written thing is always very difficult, right? So very quickly now, what is Kinolearn? Kinolearn kya hai? Let's look at it, right? Kinolearn is a simple process. So why I work with very simple resources. I'm going to share the resources with you. I'm going to be sharing resources. बहुत simple से resources है, and the resources are just this. It's 2 sizes of chart paper. That means a 10 by 10 centimeter, 10 by 10 centimeter, and a 10 by 20 centimeter. These are the 2 sizes of paper I use. Why do I use paper like this?
that when you actually अब जब देखते हैं इसको, I'll stop share. Why this size of paper? We sustainable development. हम एक यूनेस्को पूरा सोच रही है कि हम कोई भी चीज जो एजुकेशन के लिए करते हैं उसको सस्टेनेबल होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए और रीयूजेबल होना चाहिए। तो अगर आप एक व्हाइट पेपर, कोई भी चार्ट पेपर लेते हैं, A4 साइज का कार्ड लेते हैं, उसको ऐसे फोल्ड करते हैं तो इट turns out to be 9.5 centimeters. So the usage of paper is complete. आपका कोई भी पेपर वेस्ट नहीं होता। तो पहले चीज जब हम लिटरेसी की बात करते हैं तो मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले रिसोर्स मैनेजमेंट सीखेंगे, उसके बाद या बात करेंगे, शायद आपको ऑलरेडी आता हो तो इट कुड बी जस्ट ब्यूटीफुल रिकैप। हम जल्दी से रिकैप करेंगे एंड वील टेक इट फॉरवर्ड एंड यू हैव टू टेल मी कि आर दीज थिंग्स अवेलेबल टू यू। फेविकॉल सबके पास मिलता है? पूनम मैम, मैं आपको देख पा रही हूँ, यू कैन से यस। अच्छा, आप ऐसे थंब उठाएंगे तो मुझे पता चलेगा। बोल्स, आइसक्रीम स्टिक्स, बैग्स, थ्रेड, रोप, ये सब सबके पास अवेलेबल होता है? यस और नो? Yes, ma'am. So this Yes, ma'am. material Yes, is, so this is the material I am going to use today. कुछ एक्स्ट्रा नहीं लूंगी मैं, आपके पास सिर्फ स्कूल में जो है हम वो यूज करेंगे और एक पूरा लिटरेसी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का सेटअप करेंगे। सो एवरीबॉडी, दीज आर 5 सेटअप्स। प्लीज इसको ध्यान से देख लीजिए, ये 5 सेटअप्स है जिसके साथ हम काम करेंगे। ओके okay, ma'am. ठीक है। Now everybody pick up your left hand. सब अपना अपना लेफ्ट हैंड उठा लीजिए, facing yourself and your thumb outside. This is your talking hand. ठीक है। जब आप बच्चों को कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं या आप बच्चों को बार बार कुछ बोलते हैं तो कितनी दफा आपको बात कर बताना पड़ता है उनको इंस्ट्रक्शन? जब एक्टिविटी होती है या लिटरेसी प्लान एक्टिविटी प्लान करते हैं तो कितनी दफा हम एक इंस्ट्रक्शन रिपीट करते हैं बच्चों को? 5, कभी कभी तो 3 या 4 टाइम 5 टाइम उनको रिपीट अच्छा, करना पड़ता अब है। जब आप 5 टाइम रिपीट कर रहे हैं पूनम मैम, तो प्रैक्टिस किसकी हो रही है? आपकी है बच्चों की? मेरी भी हो रही है। हाँ, तो हमें किसकी प्रैक्टिस चाहिए? बच्चों की। तो हम की बात करें शुरू से, क्लास 3 इयर्स ओल्ड से लेकर आप जितने भी सीनियर बच्चों को पढ़ाते, एक टॉकिंग हैंड होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपको सीक्वेंस सिखाएगा चीजों की। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम एक टॉकिंग हैंड यूज करके 5 सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे जल्दी से कि 5 सेटिंग में एक्टिविटी होती है। पहली सेटिंग होती है पेयर वर्किंग, 2 बच्चे एक साथ काम करना, उसमें ऑटोमेटिकली क्लास की स्ट्रेंथ आधी हो जाती है तो आपको इतनी चिंता नहीं लगती अरे इतने बच्चों को मटेरियल देना है, कलेक्ट करना है। पेयर वर्किंग। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज स्मॉल ग्रुप वर्किंग। कभी भी क्लास को 10 ज्यादा मत बनाइए। 10 ग्रुप में 30 बच्चे हो तो 3 बच्चे, 40 बच्चे हो तो 4 बच्चे, 50 बच्चे हो तो 5 बच्चे और आई होप 60 बच्चे ना हो क्लास में, अगर हो तो 6 बच्चे। लेकिन हमारी तैयारी होती है 10 की, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं। पेयर, स्मॉल ग्रुप वर्किंग, लार्ज ग्रुप वर्किंग, यानी सब बच्चे आपके साथ जब सर्कल में या कोई बात करते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं, टीम वर्किंग टुवर्ड्स द एंड एंड इंडिविजुअल वर्किंग रिड्यूस करना है हम, मतलब यानी बच्चा अकेला बैठ के काम करने जा रहा है उसको हमने रिड्यूस करना है। क्यों रिड्यूस करना है? क्योंकि कहते हैं कि कोई भी भाषा का विकास जब होता है तो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। यानी मैं और आप दिल से जुड़े, मन से जुड़े तो हम सीखेंगे एक दूसरे से, लेकिन हम एक दूसरे से बात ही नहीं तो फिर हम कम्युनिकेशन और लैंग्वेज और लिटरेसी कहाँ तक पहुंचेंगे? सो फर्स्ट स्टेप क्या है? इंटरैक्शन, जहाँ के हम एक दूसरे को देखें और कहे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप इज सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। उसके बाद सब कुछ शुरू होता है। तो ध्यान में रखना है, आप चाहे इंग्लिश की एक्टिविटी कर रहे हैं या मैथ्स की या ईवीएस की, फर्क नहीं पड़ता, आपके डोमेन्स कवर होने चाहिए। हम थीम्स के तरफ नहीं जाएंगे। मैं आज कोशिश करूंगी कि मैं कोई भी टॉपिक उठाऊं और 5 डोमेन्स को कवर करूं। मैथ्स हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, ईवीएस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कोशिश करूंगी ताकि ये बात आप तक पहुंचे, बट हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो हमारे रिसोर्सेज रेडी हो गए, ठीक है। अब हमारे सेटिंग्स रेडी हो गए, हमारे रिसोर्सेज रेडी हो गए।
अब हम आके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को शेयर करते हैं। तो आपका जो ये वाला पार्ट है, लुकिंग इन द मिरर, हम पहला वाला गाना करेंगे। तो सब अपना फोन, नॉर्मली तो सब वर्कशॉप में कहते हैं कि फोन ऑफ करिए, लेकिन आसपास शीशा है तो शीशा देख लीजिए, नहीं तो फोन का कैमरा ऑन करके अपने आप को जरूर देखिए। तो चलिए हम एक बहुत सुंदर सा गाना करते हैं, इट्स कॉल्ड लुकिंग इन द मिरर। तो जल्दी जल्दी से देखते हैं उस गाने को, हम शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। और सब तैयार है, सबने अपने अपना फोन खोल लिया और सबने अपने अपने आप को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से देख लिया। चलिए शुरू। In the mirror. तो चलिए, रेडी। Looking in the mirror, what do I see? I see myself smiling at me. अपने आप को देखते हैं, smiling at me. Special, special, as special can be. This is me, smiling at me, smiling at me. Okay. So, looking in the mirror, what do I see? I see myself, यानी कि एक सिंपल सा सॉन्ग दिया हमने, ठीक है। अब इसमें बताइए कि पर्सनल सोशल इमोशनल डेवलपमेंट कुछ था क्या? Yes or no? We'll open the chat also, you know. So if you tell me that personal social emotional development था क्या? Was it there? Can you tell me? Was it there? आपने कुछ फील किया emotionally? Yes? Okay. सेंसोरियल डेवलपमेंट कुछ था कि आपने आसपास कुछ महसूस किया, आपने मिरर में देखा कुछ, तो इतना ज्यादा सेंसोरियल डेवलपमेंट नहीं था, इमोशनल डेवलपमेंट था। लैंग्वेज थी, सो हमारे पास लैंग्वेज भी थी। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी हम अपने बारे में कुछ सोच रहे थे, थिंक कर रहे थे, तो वो था क्या? एंड फिजिकल डेवलपमेंट में हमने सिर्फ अपने फेस के मसल्स यूज करे। तो ये एक्टिविटी बेसिकली क्या थी? This activity was a simple activity of self-reflection, right? But at the same time, what we needed to do is look at all the domains of it. And now tick off the domains. So जब भी आप कोई एक्टिविटी स्कूल में डिजाइन करें, क्लास में डिजाइन करें, तो आपका एक्टिविटी नंबर होना चाहिए, आपकी एक्टिविटी का नाम होना चाहिए, कौन से सेटिंग में है, यानी कि स्मॉल ग्रुप, लार्ज ग्रुप, पेयर वर्किंग, और कितने वक्त की एक्टिविटी है। एंड बहुत लंबी एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी एक्टिविटीज हो। अब इस एक्टिविटी के बाद जब हमने एक छोटी सी ऐसी एक्टिविटी करी, इसके बाद इज इट इजी टू डू अ डिस्क्रिप्शन? बहुत छोटे बच्चे, माय नेम इज सोनिया एंड आई एम टॉल और आई लाइक दिस करके मैं 2 सेंटेंसेस बोल सकती हूँ। जब मैं थोड़ी सी बड़ी हो जाऊं तो मैं लुकिंग इन द मिरर करके क्या कर सकती हूँ? I can write 2 sentences on myself. मैंने पहले बोला, अब मैं लिख पाती हूँ। मैं उससे बड़ा बच्चा हूँ, सोचो, as I'm growing, I can describe myself. Looking in the mirror, how am I feeling today? So how are you feeling today? Are you able to tell me, are you sad, angry, tired, or happy? Please tell me, how are you feeling today? So I can actually ask the child for expressions. I feel happy when. I can ask the child to build sentences. I feel happy when. I feel sad when. And many times that you build small activities like this, you grow them into so many domains. And that's what literacy is about. It's about getting the child to listen, getting the child to think, getting the child to understand, getting the child to find words, to be able to read them and then write them. So at the end of the session today, I'll very quickly take you through the phonics part of it, so that we also see how do we take the children from the sound symbol association A to Z से लेकर phonics करके आगे कैसे लेकर जाएंगे, ठीक है? So looking in the mirror, what do you see? How are you feeling today? मैं आपके chats में नजर डाल रही हूँ. I want you to write, how are you feeling today? Because the learning outcome of this program for me could be
कि मैं देखना चाहती हूँ कि बच्चा अपना फीलिंग एक्सप्रेस कर सकता है या नहीं, लेकिन डोमेन्स में कितने कवर कर रही हूँ वो अलग चीज है। लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन किस चीज का होने वाला है कि बच्चा बोल पाता है, एक्सप्रेस कर पाता है कि नहीं। तो लर्निंग आउटकम एक्टिविटी का होना बहुत जरूरी होता है। आपको आपके मन में पता होना चाहिए कि आज आप क्या ढूंढ रहे हैं उस एक्टिविटी में। तो बहुत आसानी से आपकी एक्टिविटीज जो है वो एक लॉजिकल फिनिशिंग तक आ जाती है। तो आपका फर्स्ट, जैसे मैं कहती हूँ कि पहली चीज इज ग्रोइंग अ वोकैबुलरी, यानी बच्चों को आप गाने सुनाएं, कहानियां सुनाएं, मीनिंग्स बताएं, शब्द बताएं, और फिर तैयारी करें कि बच्चा अब एक शब्दकोश के साथ तैयार हो गया है। अब ये बच्चा फोनिक्स करेगा, पहले फोनेमिक अवेयरनेस करेगा, फिर फोनिक्स करेगा, फिर पढ़ेगा और फिर लिखेगा। दैट इज द वे द प्रोसेस शुड हैपन, राइट? तो इसलिए एक प्रोसेस को हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप तक लेकर आने की। एंड नाउ द नेक्स्ट वन, चिटर चैटर चिम। देखिए, अगर मैं अलग अलग कहानियां कर रही हूँ, अलग अलग तरीकों से कर रही हूँ, ताकि आप हर चीज को पिकअप करें। कहीं पे म्यूजिक होगा, कहीं पे फिंगर मूवमेंट्स होंगी, कहीं पे आपका डिस्प्ले बोर्ड होगा, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, एक अलग अलग तरीके से। आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयर फॉर 2 minutes। एंड आप अगर आप सो क्लासेस में when you want to have literacy, when you want to have reading, they say print rich environment, यानी आपके क्लास में इतना प्रिंट दिखना चाहिए बच्चों को कि बच्चे उसको सही तरीके से पढ़ पाए। एक और चीज पूछना चाहूंगी मैं, आई नीड आंसर्स फ्रॉम यू, नहीं तो इट बिकम्स डिफिकल्ट ऑन एन ऑनलाइन प्रोग्राम, क्योंकि मुझे आपके जवाब नहीं आते, तो मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरफ इस प्रोग्राम को लेकर जाना है। तो आप लोग पार्टिसिपेट करके प्लीज चैट बॉक्स में कंटिन्यूअसली मुझे जरूर जवाब दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप तो किस क्लास में आप कर्सिव राइटिंग शुरू कराते हैं। चलिए बताइए कि किस क्लास में आप कर्सिव राइटिंग शुरू कराते हैं कि नहीं कराते, और कराते हैं तो किस क्लास में। कौन सी टीचर, कोई भी मुझे बताए प्लीज, किस क्लास में आप बताते हैं, या किस क्लास में आपका I need inputs, उसके बिना नहीं हो पाता है, the session, we need to have continuous inputs आप लोगों से। यूकेजी में आप मंथ 3 यूकेजी में आप कर्सिव शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। जब आपका बच्चा प्रिंट राइटिंग करता है और पूरे, आई हैव बीन रिसर्चिंग अ लॉट। अच्छा, जब बच्चा अच्छा क्लास 1 में, चलिए आप यूकेजी में कर्सिव शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ठीक। आप क्लास 1 के अगर कोई टीचर्स हैं तो मुझे बताइए मेन प्रॉब्लम बच्चों में क्या नजर आती है क्लास 1 के बच्चों में, और अगर तो क्लास 4 और 5 के बच्चे टीचर्स हैं तो उनमें भी मुझे बताइए कि पढ़ने में बच्चों में आपको क्या डिफिकल्टी नजर आती है। जल्दी से करिए, सो दैट वी कैन कीप गोइंग अहेड। डोंट वेट, हेजिटेट मत करिए, फटाफट टाइप करिए। क्लास 1 में मेन प्रॉब्लम क्या नजर आती है, क्लास 3, 4, 5 में मेन प्रॉब्लम क्या नजर आती है। चलिए, कम ऑन क्विकली, just do that for me quickly। कंफ्यूज इन प्रिंट एंड कर्सिव, ठीक है कनिका मैम, वो तो होना ही है, क्योंकि मैं अभी इसके बारे में बात करूंगी। जल्दी से अगर मुझे आप क्लास 1 की टीचर कोई बता सके कि बच्चों में मेन प्रॉब्लम आपको क्या दिखती है पढ़ने में, और क्लास 3, 4, 5 की अगर कोई टीचर है तो आप हमें बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। सो भी मैं रिलेट कर पाऊंगी। उसको मैम कहती है रीडिंग, है ना। They are not able to read fluently, and that is the problem। ये पूरा जो रिसर्च हुआ है एनईपी को लेकर, निपुण को लेकर, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स को लेकर, वेदर इट इज इन इंडिया और यूके, और यूके में ये एडवांटेज होता है कि बच्चा, वो उसकी मातृभाषा है, जो इंग्लिश है वो उसकी मदर टंग है। हमारे कंट्री में इंग्लिश उसकी मदर टंग नहीं है, बच्चा सोचता अपनी मदर टंग में है, बोलने की कोशिश इंग्लिश में करता है। तो इसलिए रीडिंग इज अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन हमारा कंसंट्रेशन कहाँ होता है, हमारा कंसंट्रेशन राइटिंग पे होता है। तो अगर हम राइटिंग पे ही कंसंट्रेट करते जाएंगे तो बाकी स्किल्स तो डेवलप ही नहीं हो रहे हैं हमारे। अब यूकेजी में अब भी तो बच्चे ने एबीसी लिखना पूरा अच्छा शुरू करा है,
फ्लुएंटली वो सीबीसी वर्ड्स लिख पा रहा है, और आप उसको क्या करते हैं, मैं लेकर आती हूँ, एक मिनट, आई विल जस्ट ब्रिंग द मटीरियल। आप उसकी जिंदगी को क्या करते हैं, मैंने कल एक वो बनाया था, लेट मी जस्ट पिक इट अप एंड ट्रेस इट, वेरी नाइस। तो हमारे बच्चे की जिंदगी ऐसे चल रही है, करेक्ट। अगर मैं इसमें शब्द ब्रेक करना चाहूं तो ब आ यानी ये एक साउंड है, ये एक साउंड है, ये एक साउंड है, और मेरे टॉकिंग हैंड पे ब आ यानी 3 साउंड, और मैं बहुत क्लियरली, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, बच्चों को यहां तक ले जा रही हूँ। मुझे क्या करना चाहिए इस टाइम पे, सुनना और बोलने की प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, रेड लाइन ब्लू लाइन, रेड लाइन ब्लू लाइन, इसको कर्व करो, इसको लिखो। इसकी जरूरत है क्या हमको, इज व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट। बहुत स्कूल्स मुझे कहते हैं मैडम पेरेंट्स मांगते हैं, तो यानी बहुत साल पहले लड़कियां स्कूल नहीं आती थी, तो वो जो टीचर थी वो जिद से जाती थी, दरवाजा खटखटा के कहती थी बेटी को स्कूल भेजो। अगर वो हार जाती तो आज क्या होता। तो कॉन्शियसली प्लीज एक्सप्लेन टू पेरेंट्स कि आपको बच्चों को ये ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन बान फार्म खाट ऐसे वर्ड्स बोलना जरूरी है, क्योंकि बच्चा बोल नहीं पाता तो कॉपी नहीं कर पाता बोर्ड से। कॉपी करने का क्या मतलब है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम कह रहे हैं ना, सोशल इमोशनल लैंग्वेज सेंसोरियल कॉग्निटिव, ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है ये क्या क्या कमियां दिखाता है बच्चों में। बच्चा पढ़ नहीं पाता, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, हर टास्क में उसको ज्यादा टाइम लगता है, उसको कोई एक्टिविटी बोलो तो सीक्वेंस नहीं कर पाता, लिख नहीं पाता, एंड वेयर इज इट ऑल कमिंग फ्रॉम, बिकॉज हम कॉन्सेंट्रेट गलत जगहों पे कर रहे हैं। तो प्लीज प्लीज all display material to be reading material, and let the children write the same script and read the same script till they become fluent readers. जब वो fluent readers बन जाते हैं फिर आप कोई भी स्क्रिप्ट लिखाइए फर्क नहीं पड़ता, बट जब तक वो फ्लुएंट रीडिंग नहीं कर पाते तब तक एक स्क्रिप्ट रखिए, बिकॉज नॉट ओनली वो रीडिंग करने की कोशिश कर रहा है, उसको शब्दकोश चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन चाहिए, वोकैबुलरी चाहिए, एक्सप्रेशन चाहिए, ड्रामा चाहिए, सब कुछ चाहिए, है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स लिखाए जा रहे हैं, लिखाए जा रहे हैं उनको, उससे कुछ नहीं होने वाला। एंड द कंट्री इज टेलिंग यू दिस, रिसर्चर्स कह रहे हैं आपको कि इस सिस्टम को बंद करिए। और कोई ना कोई, ये देखिए 2 ही तरीके हैं आपके पास इस पॉइंट पे, या तो आप लीड करेंगे इस चेंज को या आप फॉलो करेंगे, लेकिन बदलाव तो होने वाला है। क्योंकि मैं रोज देखती हूँ, यू नो, हम एक आंगनबाड़ी का प्रोग्राम रन कर रहे हैं, तो आंगनबाड़ी के प्रोग्राम में वर्कशीट के साथ एक्टिविटी जाती है और एक्टिविटी के साथ 2 मिनट का एक वीडियो क्लिप जाता है। तो मैंने कुछ 400 ऐसे वीडियो रिकॉर्ड्स करे। आज जब वो बच्चों की रिकॉर्डिंग वापस आती है तो वो मेरे लहजे में बोलते हैं, the way I speak they speak like that. Once upon a time there was a this, and it's so beautiful. So reading skills will happen if your listening is good, if your activities are good, if your interaction is good, and short activities. तो आपका जो मैजिक है to plan short activities. Now प्लानिंग ऑफ योर बोर्ड, ये 8 फुट का बोर्ड है, मैं जब हाथ खोल रही हूँ तो ये 8 फुट का बोर्ड है। दिस पार्ट इज द अल्फाबेट फ्रीज, ये नर्सरी केजी क्लास 1 में होना चाहिए। 2 ऑनवर्ड्स फ्रीज की जरूरत नहीं है। 2 ऑनवर्ड्स किस चीज की जरूरत है, एक थीम वॉल होनी चाहिए जिसमें बहुत सारे पॉकेट्स होने चाहिए। ये बनती कैसे है, कुछ नहीं, एक कोई भी चार्ट को लीजिए, उसको पॉकेट्स में फोल्ड कर दीजिए और स्टेपल कर दीजिए, और फिर ये बैकड्रॉप आपका बहुत सुंदर सा बन जाता है। इसको अब आपका, जैसे हमने टीचर, डिजिटल, पेरेंट्स, मैंने इसको सब करा, फिर बच्चों का बेस बनाया, अब मैंने ये सब निकाल दिया तो मेरा ये खाली हो गया ना, मेरा फीलिंग्स का बोर्ड था, अब मैंने इस बोर्ड को खाली कर दिया, अब मैं कुछ भी और लगाऊं इसमें। Now I can make this a Hindi board, I can make it a language board, I can make it a reading board, I can make it a wild animal, domestic animal board. मैं जो चाहूँ इस पर मैं बना सकती हूँ, लेकिन अगर मैं इस पे स्टेपल कर दिया तो डिस्प्ले का क्या फायदा।
प्लस एक्टिविटी करनी है मुझे। मैं अब जैसे एक और स्टोरी करने वाली हूँ, उसका मुझे एक एक्टिविटी करना है, तो मैं एक्टिविटी मटेरियल अलग बनाऊंगी, डिस्प्ले मटेरियल अलग बनाऊंगी। तो मेरी टीचर इतना वक्त नहीं है, आज भी देखिए आप लोग भाग के आ रहे हैं ना घर। सो क्रिएट योर डिस्प्ले रिसोर्सेज इन अ वे which will become your activity and interactive resources. So that will help you. उससे आपको बहुत मदद मिलेगी, आपका टाइम बचेगा। हर चीज आप मटेरियल पे एक बेस पे बनाएंगे तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो हम अगले 2 या 3 मिनट में आपका बेस बनाना भी आपको सिखा देते हैं, ये आप मैं एक दफा बता देती हूँ। और फिर आपको अगर वर्ड चार्ट, जैसे आप हिंदी कर रहे हैं, मैथ्स कर रहे हैं, ईवीएस कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक कर रहे हैं, मैंने जो ये ट्रेन्स और वर्ड्स हैं, मेरी बेटी जब एमबीए कर रही थी वो तब भी उसमें पॉकेट्स में डाल के सीखती थी। तो जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते थे, जो उसको याद नहीं होते थे, वो एक कलर कोड में जाते थे। जो दूसरे वर्ड्स हैं वो दूसरे कलर कोड में जाते थे। सो कलर कोडिंग इज वेरी सिंपल। पॉकेट चार्ट्स बनाइए और पेपर मत वेस्ट करिए, तो दैट विल रियली रियली हेल्प यू। तो मैं बहुत जल्दी से आपको एक मटेरियल बनाने का तरीका बता देती हूँ। दिस इज व्हाट यू कॉल द राइटिंग कंट्रोल कार्ड, यानी इससे आपकी राइटिंग संभल जाती है। इट्स अ नॉर्मल 4 रूल्ड कार्ड। अगर हमने लिखना है तो हम इसको इसके पास रखते हैं और फिर इस ऑर्डर में लिखते हैं, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, मिडिल लाइन, ताकि आपका जो अलाइनमेंट हो कभी गलत नहीं होना चाहिए। तो बच्चों के लिए अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रीडिंग कार्ड्स बनाना बहुत जरूरी है। तो आप एक वॉल बनाएंगे जिसमें खूब सारे पॉकेट्स होंगे, पेड़ में पॉकेट, पत्तों में पॉकेट, नीचे पॉकेट, ऊपर पॉकेट, पॉकेट पॉकेट पॉकेट, और एंड ऑफ द डे चार्ट खाली। फिर हम अगले दिन क्या लगाने वाले हैं बच्चों को नहीं मालूम। तो उस दिन की एक्साइटमेंट, आप अपना काम करिए और दूसरी क्लास में भेज दीजिए, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है। तो उसमें ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सारे बड़े बच्चों के लिए राइट अप टू द प्राइमरी क्लासेस एक रीडिंग वॉल होनी चाहिए जो कुछ ऐसे लगती हो। ये सब पॉकेट्स है, 5-10 by 10 सेंटीमीटर की पॉकेट्स है। उसमें जो भी 4 लेटर के शब्द हैं, 4 या 5 लेटर के शब्द, वो 10 by 10 में आएंगे। और जो उससे बड़े शब्द हैं, बिग वर्ड्स विल कम ऑन 10 by 20। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, हिप्पोपोटामस, ये सब 10 by 20 में फिट हो जाते हैं। आई एम टॉकिंग ऑफ वेस्टेज ऑफ पेपर ऑल्सो, क्योंकि हमारे पास ऐसे अनएंडिंग रिसोर्सेज तो है नहीं। सो डिस्प्ले, अब इसका क्या काम है? दिस इज द साइट वर्ड वॉल, यानी जो बहुत ट्रिकी वर्ड्स होते हैं, साइट वर्ड्स होते हैं, जिसको बच्चे को ब्रेकअप नहीं करना, वो इस वॉल पे जाते हैं। अगर कोई वर्ड डिकोडेबल है, यानी उस शब्द को आप सही तरीके से तोड़ सकते हैं, तो वो आपके इस रीडिंग वॉल पे जाता है। लेकिन इन शब्दों को उस रीडिंग वॉल पे मत डालिएगा। बच्चों को डिस्टिंक्टिवली पता होना चाहिए कि ये साइट वर्ड्स हैं। 130-140 साइट वर्ड्स होते हैं। डॉल्श लिस्ट ऑफ साइट वर्ड्स है, जैसे मोस्ट कॉमन वर्ड्स होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, इन, ऑन, फॉर, एम, विद, बिकॉज, एम, ऐसे शब्द होते हैं। उनको आप इधर डालते जाइए। पिक अप 4 words to 5 words in a week and get the children to work on it. नाउ बाइलिंगुअल क्लासरूम, यानी आपने जो शब्द इंग्लिश में लगाए आप निकाल दीजिए और फिर इसको हिंदी में लगा दीजिए। सो 1 मिनट में आपका क्लासरूम बाइलिंगुअल बन जाता है, आपको बहुत एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि आप मदर टंग को इतना एलिमिनेट मत करिए। It's very, very important to create a classroom environment like that. Right? So we are going to go now into the next series of activities. अभी मैं कुछ मैंने 1-1.5-2 घंटे में मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा निपुण एनईपी के बारे में बताऊं, डिस्प्ले के बारे में बताऊं, एक्टिविटी सेटिंग्स के बारे में बताऊं, डोमेन्स के बारे में बताऊं, इंटेलिजेंसेस के बारे में बताऊं, क्योंकि इनकी वजह से एक्टिविटीज करना जरूरी है। बिना इसके पूरा डेवलपमेंट होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ, मार्क्स बहुत अच्छे नहीं लाते, लेकिन मेरा जो स्किल सेट है वो बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैं बहुत कुछ वो कर पाती हूँ जो बहुत स्ट्रॉन्ग एकेडमिक लोग भी नहीं कर पाते।
So like we say कि हमने decide किया है कि we will take our learning into the heart of India. एक बहुत खूबसूरत तरीके से हम जो ये बदलाव है मिलकर लेकर जाएंगे तो पॉसिबल है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो हमारा डिस्प्ले हो गया, अभी हम इसमें एक्टिविटीज करेंगे और डाल देंगे। That means I can make my display board and just keep it ready and then keep adding activities to it, right? So you have your A to Z, this and this for all the classes. Try and putting it, it will really make your classes enrich. And with no cost. क्या है इसमें कुछ 2-3-4 पेपर्स लग रहे हैं, 60-70 रुपए इसके बनते हैं. It takes barely about 30 rupees to do that. So in actually less than 200 rupees, you can create a whole learning environment for your children. Digital हो तो बहुत अच्छा, boards हो, digital board हो, लेकिन सारा टाइम डिजिटल में क्या हो रहा है वो जो हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि बच्चों की कंसंट्रेशन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है. सो आप स्थिर to be little patient, वो होना भी बहुत जरूरी है. And also to create this whole process. Now time management एक बहुत important सी चीज होती है. That time management कैसे करेंगे, यानी कि आपका एक्टिविटी का वक्त कितना होना चाहिए, एक्टिविटी का ट्रांसिशन यानी 2 एक्टिविटीज के बीच में कितना वक्त होता है, हर सब्जेक्ट में कितना अलॉटमेंट होता है आपके लर्निंग टाइम का, और बच्चा कितना इन्वॉल्व होता है एक्टिविटी में, उसका टाइम कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है. तो जब भी आप एक्टिविटीज प्लान करें तो आप इतना करिकुलम मत प्लान करिए सिलेबस जिसमें एक्टिविटी को पुश करना पड़े. आपका बैलेंस होना बहुत जरूरी है. एंड अब तो बहुत आसान है बिकॉज योर सिस्टम आपको बदलने को कह रहा है ना. तो हम 2 चीजें अभी हम एक और स्टोरी करने वाले हैं, इसको चिटर चैटर मंकी. मैं अलग अलग टेक्निक्स भी आपको साथ साथ करवा रही हूँ सो दैट इट विल वर्क विद योर फर्स्ट वन. व्हाट डिड वी डू, वी डिड जस्ट अ रीडिंग एक्टिविटी, राइट. अब हमने एक पपेट ले लिया. अब मैं जब ये स्टोरी करूंगी तो मैं इस कहानी को अलग अलग क्लासेस के लिए भी करूंगी. कहानी एक है लेकिन काम अनेक है, ठीक है. तो हमारे पास एक कहानी होती थी जो मेरी मैं आई डू एन एक्टिविटी फॉर मैथ्स that once upon a time, मैं आपको एक मिनट just give the message. तो हमारी एक सीक्वेंसिंग एक्टिविटी है मैथ्स में जो हम करेंगे बाद में वो we will do, but this is a sequence activity that there is a train and there is a rabbit and there is a owl. तो ये एक सीक्वेंसिंग एक्टिविटी है. अब मैं इस एक्टिविटी को एक रिदमिक लर्निंग एक्टिविटी बनाने वाली हूँ लैंग्वेज के लिए. Okay, so once upon a time there was a chimp, and he was a very, very talkative chimp. He would love to chat. So the chimp would love to chat. So one day he came out, and where did the chimp live? The chimp lived in a lovely little house. So the chimp came out and he went looking up and down, and he found a bear. So he found a bear, and he was a fat bear. So he said, chitta chatta, E-A-O. And the bear said, shh, please go. So the monkey felt really sad. The chimp felt sad. He went down and then he went back into the house, and it starts getting as display. So the chimp saw a fat bear. Okay, then he again peeped out and went. What did he do? He went chitter chatter, E-A-O, and then he went and he found a deer. And it was a thin deer. So children who could only do deer will do a deer. If you feel adjectives need to be added, you can add an adjective to the story time. He saw a thin deer and he said chitter chatter, E-A-O. And what did the deer say? The deer said, oh dear, oh please go. And then again, he went up and down, opened the door, went inside and sat down. Again, he wanted to chat. So again, he popped out and went looking for another animal to talk to. So he found this elephant. He was a huge elephant and he said, chitter chatter, E-A-O. And the elephant said, please go. And the huge elephant
sat down under the tree. So your language is happening, your story is happening. And then he went, opened the door, went back inside. Now again, he wanted to talk, again, he wanted to talk. So he came out and what did he see? So I'm cutting the story short because we do the other stories also. Then he met this very tiny little bird, you know. So he met a tiny, small little bird. Name was Chirpy Chip. And he said, chitter chatter, oh, and he thought that Chirpy Chip is going to be very angry with him and say, go. But Chirpy Chip was also a chatty bird. So she said, chirp, chirp, cheep, cheep, let's chatter, chirp. So he said, chitter chatter, and she said, chirp, chirp, cheep, cheep. And they made really good friends. Now, how do I convert something so small into a learning process? इतनी सी चीज को मैं कैसे एक लर्निंग प्रोसेस बनाऊं, मैं क्या क्या कर सकती हूँ इसके साथ? तो मैं एनिमल्स एंड एडजेक्टिव्स को अलग कर सकती हूँ, मैं एक्टिविटी के बाद ड्राइंग कर सकती हूँ, राइट ऑल द कैरेक्टर्स एंड राइट द नेम्स कर सकती हूँ, यूज द कैरेक्टर्स एंड मेक अनदर स्टोरी कर सकती हूँ, एड मोर कैरेक्टर्स कर सकती हूँ. ये मैंने पहले दिन किया. अगले दिन I can look at and I can actually distribute more material and bring a tall giraffe, have a long snake, have a few bugs, have many bees, get the spelling of chimpanzee also, right? A big hippo, okay, and a short caterpillar and a long snake. So many things I can teach the children with one story. And obviously, अगर writing ऐसी होती है जहाँ पे absolute clarity हो, and इसके बाद अगर आपके sight words, for example, आपने short भी करना हो, तो sh और short, तो आपका phonics करना बहुत आसान हो जाएगा और आपका display बहुत beautiful हो जाएगा. These are little things that are, see देखिए there is no one daira कि ऐसे करने से लिटरेसी बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन डिस्प्ले बहुत जरूरी पार्ट है लिटरेसी का. जब बच्चा बार बार उन चीजों को देखेगा, उनको पढ़ पाएगा, एंड आप नोटिस करेंगे कि बहुत कम हमने विजुअल दिया है. हम फोकस किस पर कर रहे हैं कि बच्चे को समझ में आए और बच्चा पढ़ पाए. मतलब वो पिक्चर देखकर शब्द ना बोल पाए, उसको पढ़ना आना चाहिए. Therefore, clarity of work like this is extremely important. अब अपना जरा टॉकिंग हैंड उठा लीजिए आप लोग, जो आप उठा रहे थे. एक टॉकिंग हैंड उठाइए ताकि हम इस पे काम कर सके. This is a very important hand for the way we okay, so the way now talking hand, why? Talking hand for instruction. अब जैसे मैं आपको एक instruction देने वाली हूँ, तो whenever I do an activity, in how many sentences will the instruction come? That's a very important part of your activity-based learning design. For example, I want you to do an activity. So I'm going to say, stand up, find a partner, stand in front of your partner and listen to the music. Do the action. So I can do multiple things with the action that we are going to do. So if anybody is doing the instructions with me, so stand up, find a partner, stand in front of the partner, do the actions. So everybody stand up, find a partner, stand in front of the partner and do the action. Now, if the child repeats this a couple of times, the child is able to, number one, get a sequence of the activity. So any activity that you design for children, any activity that you design for the children should not be more than 5 instructions. You should not have more than 5 instructions, because when you do that, it really helps the children to understand the activity and the sequence. So
It's very, very important. Please understand that if the children can, just understand the fact that I'm just going to share. तो अभी हम एक हिंदी एक्टिविटी करने वाले हैं. लिटरेसी में जरूरी नहीं होता कि हम सिर्फ इंग्लिश करें, हम हिंदी में भी हम एक एक्टिविटी बहुत सुंदर सी कर पाते हैं. तो चलिए इस पे हम एक एक्टिविटी छोटी सी करते हैं. बच्चों को जोड़े बनाकर एक दूसरे के आमने सामने खड़े तो खेल आपको खेल याद सकते है हम हैं. वो करते थे. 1 2 3. आओ मिलो शीलो शालो, आओ मिलकर ताली बजा लो. ऊपर नीचे बाएं और दाएं, ऊपर नीचे बाएं और दाएं, ताली मारे सर को घुमाए. ओके. तो मैंने बच्चों को खड़ा किया और एक छोटी सी एक्टिविटी कराई, ऊपर नीचे दाएं बाएं सर को घुमाए. तो इसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर होती हैं, बच्चा कर पाता है और आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं होती. ऐसी एक्टिविटीज किसी भी क्लास के लिए एक ट्रिगर होती है. यानी जब आप बच्चा बैठा है, कभी रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज करने से एक लिटरेसी लर्निंग का एनवायरनमेंट बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है. सो डोंट लुक फॉर एक्टिविटीज विच आर वेरी डिफिकल्ट. डू वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्टिविटीज and that will really help you to take your classes forward. So we are going to do the next activity. Let's just do that one. Okay, so who took the ice away is going to be, so we have to check with each activity कितने domains touch कर पा रहे हैं हम. अभी जब मैं ये करूंगी who took the ice away, आपको चेक करना है कि ये कितने domains में काम आता है. Okay, so let's just, I'm going to stop the share and I'm going to now find the ice and I'm going to just give me a minute, please. I will just open the I just is a small little this thing that I want you to see. Okay, I think I'll just open it. I think इतना सारा मैं खोल के रखती हूँ कि कभी कभी ये बंद हो जाता है. But this is also discovery. आप साइंस ले लीजिए, आप इंग्लिश ले लीजिए, आप हिंदी ले लीजिए, मैथ्स ले लीजिए. Language can be developed in any way. It is all about just observation and getting the children to understand how things work, right? So आपको मैं कौन सा एक्टिविटी करती हूँ तो दोनों भाषाओं में. तो लेट्स सी आप, और इसमें आपको थोड़ा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. पहले तो इसको देख लीजिए आप, जस्ट अ सिंपल एनिमेशन. A seed brown and round, sleeping under the ground. The raindrops came falling down. Water all around, smiling, the sun then said, wake up, sleepyhead. Wake up, sleepyhead. The seed then grew a little root. Out came a little green shoot, swaying in the air. Blowing everywhere, blowing everywhere. Okay, great. So this is one language. I'm going to now sing a beautiful song for you. आप लोग थोड़ा सा अगर इस पे आ जाए on like, if you can all switch on your cameras and I can see you all, I can then see if there is a little participation. Voices अगर आ जाए तो बहुत अच्छा साथ में. Or at least let me see, how we can now, I'm taking this into a
we are talking about, we did display. We are now going to talk about how you can get it into a bilingual classroom. यानी आप कोई भी जो टॉपिक लेते हैं आप दोनों भाषाओं में कैसे कर सकते हैं. Like, so I am going to do and I'm going to do it the activity way, right? So अभी हमने बीच के बारे में बात करी and it could be any level, right? So will you be able to sing with me? चाहे आपकी आवाजें आए या ना आए, but अगर आप मुझे movements दिखाते हैं तो मेरे लिए एक थोड़ा सा पार्टिसिपेशन जैसा हो जाएगा. थैंक यू अंजू मैम, तनिका मैम, आपने एकदम से रिस्पॉन्ड किया. थैंक यू सो मच. आई होप कि जो आप इतने थके हुए आए थे और मेरे साथ आपके पास अभी जो टाइम है, आई होप इट्स ओके. आर यू बीइंग, इज इट एन ओके सेशन? इज इट ऑल राइट फॉर योर? ओके, ग्रेट, ऑल राइट. तो चलिए, अब हम कहते हैं कि हमें इंडिया को अपने क्लासेस में लाना है. दैट्स व्हाट द एनईपी इज सेइंग ना. तो हमने अपने डमरू को, ढोलक को उठाना है और हमने एक ये बीच की कहानी है ना. तो हम, ढोलक है, हम सब बहुत ग्रेट पार्टिसिपेंट्स ना हो, बहुत ग्रेट म्यूजिशियंस ना हो, बट हम डेफिनेटली काम कर सकते हैं इस पे. आई एम नॉट अ ग्रेट म्यूजिशियन, बट हम फिर भी मैं काम कर लेती हूँ. दो थे बीज, बीज थे दो, धरती के नीचे रहते थे वो. तो ये ढोलक है. अब चलिए, ढोलक भी नहीं है हमारे पास, तो सोचिए, तो हम टेबल से काम लेंगे, ठीक है. तो मतलब वी विल नेवर बी हेल्पलेस. हम ये नहीं कहेंगे हमारे पास नहीं है. इंडिया में कहा जाता है जैसे रसोई हमारी अन्नपूर्णा होती है, यानी आप कभी नहीं कहते कि हमारे पास ये नहीं है. वैसे ही एक क्लास टीचर, एक टीचर जो होती है वो एक अन्नपूर्णा है. वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकाल लेती है. तो हम टेबल को यूज करेंगे. रेडी? तो दो थे बीज, बीज थे दो, धरती के नीचे रहते थे वो. हाँ मैम, बिल्कुल. यू नो, जुगाड़ इज सच ए ग्रेट वर्ड फॉर इंडिया एंड आई एम वेरी प्राउड फॉर फॉर टू बी अ, क्योंकि हम जब, व्हेन आई डू सेशंस मैम, हम लोग जब कभी इंटरनेशनल या ग्लोबल स्पीकर्स के साथ काम करते हैं, यू नो, दे आर सो स्पेसिफिक. वो एक चीज को लेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे, फिर उसको वो रीड करेंगे, फिर 6 महीने तक रिसर्च करेंगे और हम पलट के ऐसे कर देते हैं. So sometimes I feel we undermine ourselves. पहले हम सब फिनलैंड जा रहे थे अपनी एजुकेशन को सॉर्ट आउट करने, अब हम सब इजराइल जा रहे हैं. लेकिन हम अपने स्किल्स को नहीं देखते. वी आर अ ब्यूटिफुली स्किल्ड कंट्री. हमारे पास म्यूजिक है, रिदम्स है. अब आप चलिए, अब आपको, चाहे आप अनम्यूट ना करें, लेकिन आपको बीच बीच में गाना है, दो थे बीज, बीज थे दो, और हम कहानी पूरी खत्म करेंगे अगले 5 मिनट में. 5 मिनट की कहानी है ये. दो थे बीज, बीज थे दो, धरती नीचे रहते थे वो. दो थे बीज, बीज थे दो, धरती के नीचे रहते थे वो. ओके, तो आपस में बातें करते थे, कभी नहीं वो झगड़ते थे. आपस में बातें करते थे, कभी नहीं वो झगड़ते थे. दोस्ती उनकी थी गहरी, एक दूसरे के पहरी. दोस्ती थी उनकी गहरी, एक दूसरे के थी पहरी. चले, दो थे बीज, बीज थे दो, धरती के नीचे. देखिए, मुझे बहुत अच्छा गाना वाना नहीं आता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गा देना चाहिए. फर्क पड़ता है. आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मेरी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, मेरा गाना अच्छा होता जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. अगर आप एक साइंस, ये एक साइंस टीचर का गाना है इंसिडेंटली, ये एक इंग्लिश टीचर का गाना नहीं है, ये एक साइंस टीचर ने गाना बनाया हुआ है. अच्छा, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. ओके, पहले बीज ने, हाँ, दोस्ती थी उनकी गहरी. पहले बीज ने, बाहर मैं जाता हूँ, बाहर क्या है देखकर मैं आता हूँ. दूसरे बीज को उसने समझाया. बीज ने करा इनकार, बाहर जाने से डरता था यार. दोस्त ने उसको बहुत समझाया, लेकिन उसको कुछ समझ में ना आया. दो थे बीज, बीज थे दो, धरती के नीचे रहते थे वो. क्या होता है कि बच्चा अगर सुन भी नहीं रहा है और आप बीच में एक ऐसा छंद डाले, तो सब गाने लगते हैं. तो एक जैसे एक रिदम सा बन जाता है. तो पहले बीच ने हिम्मत जुटाई, ऊपर से थोड़ी मिट्टी उठाई.
तो मैं कहती हूँ मिनिमम मटेरियल बनाइए, मिनिमम मटेरियल बनाइए, अपने बॉडी को यूज करिए, आप यूज करिए, हाव भाव को यूज करिए, हाथ करिए, तो आपको कभी किसी की कमी नहीं नजर में आएगी। अगर आप चीजें ढूंढते रहें, तो कहते हैं स्टोरी टेलिंग एक लिटरेसी, एक समझने के लिए बॉडी का हाव भाव होना भी बहुत जरूरी है ना। तो पहले बीज ने हिम्मत जुटाई, ऊपर से थोड़ी मिट्टी हटाई, सर उसने बाहर निकाला, बाहर था बहुत उजाला, सूरज की किरणें थी बिखरी बिखरी, चीजें थी सारी निखरी निखरी, एक था बीज, बीज था एक, बाहर निकला दुनिया देख, एक था बीज, बीज था एक, बाहर निकला दुनिया देख, धीरे धीरे ऊपर बढ़ा, आसमान तक जाना था, धीरे धीरे ऊपर बढ़ा, आसमान तक जाना था, उसने आसमान तक जाना था। अब उसने यही ठाना था कि मुझे यही रहना है, उसने था एक था बीज, बीज था एक। सो रिदम पैटर्न आप बढ़ाते जाइए, कम करते जाइए, डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी ऑफ द क्लास। बहुत आसान होता है, एक दफा आपने रिकॉर्डेड म्यूजिक कर लिया तो फिर आपका रिदम्स चले जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको बीज एंड एक और बहुत सुंदर तरीका है, एक था बीज, बीज था एक, तो आपका क्लैप भी हो सकता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये एक ऐसी बीट है जो मैं आपको इसके बाद करूंगी, पहले कहानी खत्म करें, बीज नाराज हो जाएगा मुझसे। तो अब ये जो बीज था, ये एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया। रोज चिड़िया आती थी, मीठे बोल सुनाती थी, चुन्नू मुन्नू गुड़िया पप्पू भी आके पेड़ के नीचे बैठते थे, नाना दादे नाना नानी दादा दादी मामा मामी चाचा चाची, आपने जितने रिश्ते से खाने सिखा दीजिए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब वहां पर आते थे और पेड़ के नीचे बैठ के बातें करते थे। और बीत गए अब साल कई, बीत गए अब साल कई, एक था पेड़, पेड़ था एक, बाहर निकला दुनिया देख। दोस्त की उसको याद आती थी, दोस्त की याद उसको आती थी, मिलने को सताती थी, उसने एक जुगत लगाई, उसने एक जुगत लगाई, अपने बीजों को एक बात समझाई, जाओ तुम नीचे जाओ, जाओ मेरे दोस्त को मना के लाओ। तो अब इस पेड़ के बीज जाएंगे और उसके दोस्त को मना के लेकर आएंगे। सर पर बीज भागे, सर पर बीज भागे और बीज से मिले नीचे जाके, बीज उन्होंने बहुत समझाया, दोस्त था उन्होंने पैगाम पहुंचाया। बीज ने फिर अपनी हिम्मत जुटाई, ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी उठाई, सर उसने बाहर निकाला, बाहर तो भाई बड़ा उजाला, निखरी निखरी, और उसने अपने पेड़ को देखा, पेड़ ने हाथ बढ़ाया, पेड़ ने अपना हाथ बढ़ाया, तो बाहर निकाला, तो बाहर निकाला। अब दो है पेड़, पेड़ है बाहर देख। अब छोटा सा पेड़ था, छोटा सा बीज था, वो खुद बड़ा हो गया और फिर उसने जाके अपने, तो हम अब आपको प्लांट लाइफ पे एक कहानी सुना देते हैं। तो क्या मैंने ट्रिगर किया, क्या मैंने बच्चे को एक इमोशन, एक कुछ ट्रिगर किया बच्चे में, और अब मैं प्लांट की एक पूरा एक लेसन करा देती हूँ, तो क्या बच्चा बेटर रिस्पॉन्ड करेगा? So it's not about which language. I could be doing the science in English, but in 5 minutes, if I can do a beautiful story like this, does it help my child to connect? And does it also say life skills? यानी जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर आप बड़े हो जाओ और आपका फ्रेंड नहीं कर पाए, तो आपको उस पर हंसना नहीं चाहिए, आपको उसके पास जाके उसको समझाना चाहिए। तो आप आपके मन की जो whatever is your classroom situation, आप उस पे इस चीज को ढाल सकते हैं। So that is what literacy is all about. It's about creating an interest in wanting to learn. अगर हमने वो इंटरेस्ट ट्रिगर ऑफ कर दिया, अलग अलग तरीकों से ट्रिगर ऑफ कर दिया, इट हेल्प्स।
And today, why I was talking about storytelling techniques is because that's going to be the need in the whole literacy platform, जहाँ पे आप definitely एक literacy platform पे जा रहे हैं. स्टोरी टेलिंग एक बहुत बड़ी नीड बनने वाली है. सो बेटर टू पिक अप द इंडियन स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स. हमारे पास कितने ब्यूटीफुल टेक्निक्स हैं जो हम एक्चुअली आगे ले जा सकते हैं. And once we do that, once we get that in place, once we get that whole process in place, it becomes very, very easy to work. Okay? So, जो भी मैं इंग्लिश में करती हूँ, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, क्या अगर मैं बच्चों की भाषा में करूँ, प्योर, हम दो प्योर भाषा, एक बिल्कुल शुद्ध भाषाएं बोले. जब हम हिंदी या कोई भी भारतीय भाषा बोल रहे हैं, तो उसको शुद्ध बोलें. उसमें फिर हम कोई भी अंग्रेजी के शब्द ना डालें. इंग्लिश बोल रहे हैं तो हम उसको शुद्ध बोलें. आहिस्ता आहिस्ता आप जो हिंदी है, जो आप उन बच्चों की मातृभाषा है, उसमें आप कुछ इंग्लिश शब्द डाल सकते हैं. बट पहला जो आपका बोलने का तरीका होना चाहिए वो शुद्ध होना चाहिए. कभी भी दो भाषाओं को जब आप मिलाते हैं तो दोनों शुद्ध बच्चों को सुननी बहुत जरूरी है. उसके बाद आप मिक्स कर सकते हैं, लेकिन पहले आई वुड नॉट रिकमेंड इट. अब खूबसूरत भाषाएं हमारी दोनों है, कभी भी नहीं सिखाएंगे, बिकॉज फोनिक्स और हिंदी बिल्कुल अलग होता है. मैं फोनिक्स का एक बहुत छोटा हिस्सा करूंगी. फोनिक्स एक छोटे सेशन में नहीं हो पाता. इट्स अ वेरी देयर इज अ प्रोसेस टू फोनिक्स. इसके मैं साउंड सिंबल्स करके छोड़ दूंगी. बट स्टोरीज का मैं एक बड़ा सेगमेंट सोच रही थी कि आज जरूर कोशिश करूंगी कि अलग अलग टेक्निक्स के साथ. तो हमारा बीट हो गया, म्यूजिक हो गया, मल्टी हो गया, साइंस एंड लर्निंग हो गया. कभी भी हम सोचते हैं कि साइंस को हमें कहानियों से सुनाना चाहिए. वी मेक इट जस्ट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि लिटरेसी डजंट मीन ओनली इंग्लिश or Hindi. It means every subject where the child is understanding a concept. तो उसमें आप उसको कैसे बहुत beautiful कर सकते हैं. I think that's what we are looking at, you know. So and that's what I thought I must kind of work in with you. तो चलिए थोड़ा सा हम इस पे और थोड़ी देर बात करते हैं. मैं okay, so now you're understanding कि you know when we do multilingual classrooms, यानी हम कितने डोमेन्स को टच कर पाते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने अभी ये 2 थे बीज किया. आप, मैं इसको स्टॉप शेयर करती हूँ. आप इस पर्टिकुलर जो स्टोरी थी, आप इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं. आप इसको एनैक्ट कर सकते हैं, आप वर्ड्स बना सकते हैं. आप बच्चों को पूछ सकते हैं कि आपको किस चीज से डर लगता है, आपने नया कुछ क्या किया. एक सर्कल टाइम कॉन्वर्सेशन हो सकती है. सो मल्टीपल थिंग्स दैट यू कैन डू विद दिस. अब हम जा रहे हैं स्टोरी टेलिंग के तरफ. एक बहुत ब्यूटीफुल चीज लिटरेसी की होती है लाइब्रेरी एंड रीडिंग कॉर्नर्स. यानी बच्चों को एक ऐसा लिटरेचर दें जो बच्चा पढ़ने में खुश हो. So collect a set of at a library and allow children to borrow and lend books carefully and always return the borrowed books. Create a reading corner, encourage the children to relax and read on their own. Let the children ask a lot of questions. Set up a small stage. मैं आपको stage अभी कराती हूँ. Thing. Learn words and just right. So a Chola library. Now what is the Chola library? मैं आपको तरीका दिखाती हूँ. There is a cloth bag, है ना? अब आप इसको मैं उठाती हूँ, मैं सोचती हूँ कहानी सुना दो. तो ये थ से थैला. And in English this is a grandmother's cloth bag. So थ से थैला. मैं कहती हूँ जो अक्षर सिखाओ उसके साथ एक कॉन्सेप्ट सिखा दो बच्चों को. तो क्या होता है, थ से थर्मस, थ से थैला के बजाय बच्चा एक कॉन्सेप्ट सीख लेता है. तो हम पहले थ से थैला सिखाएंगे और इसी थैले में लाइब्रेरी बनाएंगे. Literacy does not mean one thing. Please remember, literacy is a wide range of skills. वो इतने स्किल्स को हमने उसको सिखाना है. कोई है जो म्यूटेड नहीं है, प्लीज इफ यू कुड म्यूट योर, बिकॉज वो फिर इंटरफेयर हो जाता है. इफ यू कुड जस्ट म्यूट योर वॉइसेस प्लीज. तो नानी ने थैला बनाया, थ से थैला सबको
बनाया, सबने कहा नानी तुमने क्यों बनाया थैला, हम तो यूं ही बाजार जाते हैं प्लास्टिक की थैली में सामान ले आते हैं। नानी सैड हो गई, उसने थैले को ते लगाया, थ और त, और उसने रख दिया। फिर प्लास्टिक की थैलियों ने हाहाकार मचाया, पर्वत की चोटियों पे चढ़ गए, उनको जानवरों ने खाया। फिर सबको समझ में आया कि क्यों बनाया था नानी ने कपड़े का थैला। वो नानी के पास गए, कहा नानी हमें भी दे दो एक थैला। नानी को काम मिल गया, किसी ने अपनी पुरानी कमीज दे दी, किसी ने अपनी शर्ट, किसी ने अपनी जीन ले आए, और नानी ने सिल सिल के सबके लिए थैले बनाए। अब हम थैले में थैला डालते हैं और यूं ही बाजार जाते हैं, गंदा होता है तो भैया धोकर दोबारा उसी थैले को हम ले जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक की थैली छोटी सी को भी हम हाथ नहीं लगाते हैं। सब्जी वाला कहता है तो हम कहते हैं नानी के थैले में डाल दो, फल वाला कहता है तो डाल देते हैं। और अगर हमारे कपड़े पुराने होते जाते हैं और कपड़े हम थैले बनवाते जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्लास्टिक की थैली को हम हाथ नहीं लगाते हैं। दिस इज grandma's bag. Grandma's bag is made of rags. And you can actually do the whole story in English. So this is not about one language. It's about creating a richness of understanding in children. I think that's what literacy is all about. It's all about not only words, it's not about alliterations, it's not about rhymes, it's about creating and a love for the language, wanting to learn the language. So it's very interesting. A young girl who's staying with me in the village. She's failed her class 10th and has come to finish class 10th with me. Literally, that film of 10th pass, and has never learned English. So every day I used to tell her, and slowly she started identifying words, and then sounds, and then sentences, alliteration, syllables. तो ये सब करते करते सीख जाता है. It becomes for the child. अब ये जो झोला है, इसमें आप बुक्स, है ना, तो इसमें बुक्स डाल दीजिए और एक जगह टांग दीजिए, इतनी सी लाइब्रेरी बन जाती है आपकी. तो आप 3 बुक्स 4 बुक्स डालें, फिर बदलें, फिर डालें, फिर एक्सचेंज करें. एक बड़ा शेल्फ, एक बड़ी टेबल की भी जरूरत नहीं है. ये जो नानी का थैला है, ये एक थैला लाइब्रेरी बन जाता है. आप थैला लाइब्रेरी ले जाके बच्चों को बाहर बैठ सकते हैं, कहानियां सुना सकते हैं. आप इतना एक्साइटिंग कर सकते हैं कि आज आपने कहानी सुनाई लेकिन पूरी कहानी नहीं सुनाई. उनको बोला बाकी कहानी मैंने थैले में डाल दी है, मैं क्लास में रख रही हूँ, तुम लोग चांसेस लेकर पढ़ लेना. तो बच्चा खोलेगा, क्यूरोसिटी, पढ़ना सीखेगा. सो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे गांव से, हमारे आंगनवाड़ी से मैं निकाल कर लेकर आई हूँ. और इमेजिन हम ये वहां तक पहुंचा सकते हैं तो हमारे स्कूल्स में तो बिल्कुल जा सकता है ना. सो एक झूला लाइब्रेरी जरूर बनाइए, एक छोटा सा अच्छा सा पेग लगा दीजिए और उसमें आप एक क्यूरोसिटी, एक प्रोसेस बना के देखिए बच्चे कैसे. ये झोला लाइब्रेरी मुझे मिला है कैसे कि मैं किसी का इंटरव्यू ले रही थी और वो कहता था कि मैम जब लॉकडाउन खत्म होने लगा तो मेरे पास काम छूट गया, तो मेरे पास कुछ किताबें थी तो मैं बैग में डालता था और दिल्ली के आसपास बस्तियों में चला जाता था, तो मास्क लगाता था, फिर बच्चों को बुलाता था और कहानियां सुनाता था. फिर मैंने सोचा आधी कहानी सुनाऊं, फिर आधी कहानी सुनने वो अगले दिन आते थे. फिर मैंने किताबें देनी शुरू करी. So literacy is how you make it exciting. I think it's not about one process or one, एक तरीका नहीं है. It's a big range of things that you can do to help children to be interested in reading. I think that's a very, very important part of what we are going to do. So storytelling is an art. जिसे मैं कह रही हूँ एक आर्ट है, उसमें फन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, रिदम है, लैंग्वेज है, म्यूजिक है, सोशल एक्टिविटी है, इमेजिनेशन है, फोक टूल्स है, ऑडियंस है, इम्प्रोवाइजेशन है, अटेंशन सीकिंग है कि मेरा बच्चा जब करे तो मैं क्लासरूम में कैसे पिच करूं कहानी, है ना. I can do social emotional development and teach social skills, empathy, drama, self-expression, motivations, and so many other little things. Language and art, listening, imagination, vocabulary, sequencing, confidence, structures, flow lines. So after all this, then reading and writing. In social studies, exploring the atlas and cultures, learning about one's heritage, adapting to present situation. Science and mathematics, observation, problem solving,
exploration, traditional wisdom and health, order and sequencing, school readiness, यानी कि आप स्कूल के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं. तो multiple ways. Now ये एक सेट है जो मैं नॉर्मली फॉलो करती हूँ फॉर स्टोरीज. कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं अलग अलग टेक्निक्स अगले कुछ जो टाइम है हमारे पास, तकरीबन 20-25 मिनट है, मैं कोशिश करूंगी कि अलग टेक्निक्स आपको दिखा सकूं और आपको एक छोटी सी दुनिया में ले जा सकूं. तो कहते हैं कि जब आप बच्चों को कोई भी लैंग्वेज सिखाते हैं तो उसमें रिदम जो होता है, एंड ऑल्सो बीट एंड पिच, यानी रिदम, बीट एंड पिच, यानी आपकी आवाज. तो एक सिंपल सी मैं आपको स्टोरी कराऊंगी. लेट्स सी हाउ इट गोस, यू नो, एंड वील सी. So in a village there lived 4 winds, and these 4 winds were very naughty. The first wind was whisper, the second wind was whistle, the third wind was whirl, and the fourth wind was whoosh. The whisper was a quiet wind. Whistle was a naughty wind. Whirl used to get angry sometimes, and whoosh would destroy everything. A magic man came one day, and he mixed up all the winds. And now when the wind would blow, nobody would know which wind it is. So let's go and clap. Come on. We will see you all clap with me, and let's get the rhythm right. Who has seen the wind? Neither you nor I. Now what happens? When it blows really softly, you know, whispers passing by. Who has seen the wind? Neither you nor I. When it is a little naughty, you know, whistles passing by. Who has seen the wind? Neither you nor I. When it goes here and there, you know, whirl is passing by. Who has seen the wind? Neither you nor I. When it goes whoosh and whoosh, whoosh and whoosh, you know, whoosh is passing by. Who has seen the wind? Neither you nor I. Who has seen the wind? Neither you nor I. Who has seen the wind? Neither you nor I. Who has seen the wind? Neither you nor I. Who is passing by? Whispers passing by. Whistles passing by. Whirl is passing by. And whoosh is passing by. What did I do? I just used my voice, my claps, and created a whole pattern of learning, right? So each time our children are kind of in a state where we want them to respond, we want them to react, we very quickly can break into any of these beautiful rhythms, and it actually triggers the listening ability in children. So when the listening ability happens, automatically the speaking happens in a better way, the reading happens in a better way, and then the writing is just bound to happen. So little things which are so important for the children to do. Please let them continue to do it. It's very, very important, right? I'm going to do another little technique for you from the heart of India. This is a lovely story, the thing called the Kivad Katha. मैं आपको दोनों लैंग्वेजेस में करूंगी. अभी मुझे थोड़ा इनपुट चाहिए. आप लोग सब पूरा दिन से थक कर आए हैं, तो आई होप द सेशन इज कंफर्टेबल फॉर यू. आप लोग बहुत बोर नहीं हो रहे हैं और आप इस सेशन को कंफर्टेबली ले रहे हैं. अंकिता मैम ने एक बहुत सुंदर सी स्माइल दे दी है मुझे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं ठीक ठाक काम कर रही हूँ और आपके पूरे दिन की थकावट को और थकान नहीं बना रही हूँ मैं. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना. सो द नेक्स्ट टेक्निक इज जस्ट टू गेट. फिर मैं आपको एक इंग्लिश में करके दिखाऊंगी. दिस इज एक्टिविटी विद नो रिसोर्सेज, यानी हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं इसको, है ना. तो दंतापुर में दानव आया, दंतापुर में दानव आया, दंतापुर में दानव आया. बच्चों को देख के खूब मुस्काया, खूब मुस्काया, खूब मुस्काया. अब दानव जो था एक दुकान पे गया, उसने टॉफियों का डब्बा लिया. सबने कहा दानव राजा इतनी टॉफी मत खाना, सुबह दुकान पे दवाई लेने पड़ेगा आना. दानव तो दानव था, कहाँ बात मानता.
खोल खोल के टॉफी खाई, खोल खोल के टॉफी खाई। सुबह सुबह आवाज आई, दान बुझ गया भाई। दादाजी फिर वहां पे आए, दातून अपने साथ बुलाए और दानव राजा को दान साफ करना सिखाया। कैसे सिखाया? ऊपर नीचे गोल गोल, ऊपर नीचे गोल गोल, कुल्ला करने के लिए नल बस थोड़ा सा खोल। अब दानव राजा के दांत बड़े सुंदर चमकते हैं, दंतापुर से दूर दूर से लोग आते हैं। दुकान के बाहर दानव बैठता है और कैसे दांत साफ करना सिखाता है? ऊपर नीचे गोल गोल, ऊपर नीचे गोल गोल, और दिन में 2 दफा वो रोज ब्रश करता है। आजकल तो दानव जो है वो डेंटिस्ट के पास भी चला जाता है, मुंह खोल के बैठ जाता है, अपने दांत दून का चेकअप कराकर वापस आ जाता है। इसमें सिर्फ इमेजिनेशन, हमने कोई चित्र नहीं दिखाया, कोई एनिमेशन नहीं दिखाए। अब आप अपने मन से इमेजिन कर रहे थे, है ना? यू वर इमेजिनिंग विद योर ओन माइंड। दैट इज अनदर स्किल, जिसको किवाड़ खता कहते हैं, यानी देखो किवाड़ खुला है, उस किवाड़ में देयर इज नो दरवाजा, देयर इज नथिंग, ओनली इमेजिनेशन। So that's another beautiful skill for children to develop imagination. अब मैं एक और कहानी सुनाती हूँ, इस दफा इंग्लिश में सुनाऊंगी। Welcome to the land of black and gray. So a little butterfly comes flying one day. A little butterfly comes flying one day. And did you all see a butterfly? आप सबने एक छोटी सी तितली आती देखी ब्लैक और ग्रे लैंड में? आपके कलर, तितली के कलर बता दीजिए प्लीज मुझे। एवरीबडी इमेजिन अ बटरफ्लाई एंड शो मी द बटरफ्लाई कलर। लिख दीजिए कलर्स का नाम। कौन से टीचर ने कौन से रंग की बटरफ्लाई देखी, जल्दी से उसको लिख दीजिए, बिकॉज ये इमेजिनेशन है, ये हमने एनिमेशन। सी डिजिटल बहुत है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, मैं डिजिटल बहुत यूज करती हूँ, लेकिन आप नोटिस करेंगे एक भी सिंगल टीचर का बटरफ्लाई दूसरे के जैसा नहीं होगा। तो जब हम डिजिटल दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं हम बच्चों की क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को कर्व भी कर रहे हैं। डिजिटल इज इरिप्लेसेबल, अभी तो ये है, लेकिन बीच बीच में डिजिटल से हट के भी बच्चों के एक इमेजिनेशन पे काम करना बहुत बहुत जरूरी होता है। और जब अब ये जो कहानी है, हमने इसकी पटकथा बनाई है। पटकथा क्या है? इट इज जस्ट द चिल्ड्रन ड्रॉइंग, एंड सो आई एम जस्ट गिविंग यू ऑल द टेक्निक्स फ्रॉम इंडिया। ये सारा जो कहानी का तरीका है, ये मैंने बिल्कुल इंडिया के हार्ट से लिया है, कहीं ना कहीं बिल्कुल जिसको कहते हैं इंडिया का दिल, क्योंकि इतनी सुंदर तरीके हैं। एंड एनईपी कह रहा है कि आप लोग कोशिश करिए कि आप एक इंडिया को अपने अपने क्लासरूम में लेकर आए। तो हम इसको जस्ट रोल कर रहे थे। तो पटकथा क्या होती है? इट इज सिंपली curtains. It is the curtain opening again and again, and the child is reading it. तो you see तो बड़े बड़े पट होते हैं, बड़े बड़े कर्टन होते हैं, जिसमें महाभारत रामायण की पेंटिंग्स होती हैं, कृष्ण जी की कहानियां होती हैं। So पट कथा is a way which we can bring into our classroom with the help of simple drawing. So welcome to the land of black and gray. An angry king lives in that land, and there is no color around. Then a small butterfly flies into the land and says, "Why is your land this way? Come with me to my land of the summer sun." So the queen tells the king, "Let's go with this butterfly." And they go and see what colors may be. They see pink, red, and blue. And green is the most beautiful land that they have ever seen. And then I put a little phonic page here, which I'm not covering right now. Ye main hata rahi hu. And they all got lovely things for everybody. And they told the butterflies, "Please come back to our land of black and gray." And all the butterflies flew to the skies. They dropped colors all over the land. And now there is no land of black and gray. There is color all the way, and children love to laugh and play. So what did we do? We created a small imagination. We created a पटकथा. मेरा एक सिंपल लॉजिक है मैम, कि अगर हम अपने लेसन्स को अलग अलग तरीकों से बच्चों को करा सकें,
So literacy is bound to come into our schools. Display has to be there. Words have to be well written, very clearly written. Don't run after cursive writing. It does no good for your children because our time has to go on language development, right? So it's very important that we have a host of beautiful techniques with us, which will help this literacy come alive into our classrooms. Even asking, even doing, say, stories. Now you've done a story. So recalling ke liye questions. What, who, where, when, why, and how many, true or false. Evaluation ke liye. Why do you suppose that the king did not like colors? What do you think will happen next? Do you believe there could be a land like this? What would you do if you were the butterfly? How would you feel if you had no colors? Can you think of a question to ask with the story? Can you name the words that have a so-and-so sound in it? Or can you blend in segments? So on and so forth. So even any story you tell, different ways to ask questions make it really, really interesting and very, very powerful. Now coming to the small part of the segment जहाँ पे एक बहुत अच्छा सा टेक्निक है जो मैंने छोड़ दिया है. I think we should do it in the next session. It's a beautiful thing of how to do a stage. तो कल जब हम परसों न्यूमरेसी पे बात करेंगे तो मैं तब करूं या अभी कर दूं? Let me just do it now. I think let me just numeracy we will do another one. So take a flatty, 3 feet, and have little ribbons or dupattas or anything tied around it. Okay. Now, if you put it in front, it's a curtain, and if you put it behind, it's a backdrop. So, ये 3 फुट की लाठी आपके आराम से आपके चेयर पर आ सकती है और 2 चेयर्स पर, और आप इस पे एक बहुत ब्यूटीफुल स्टेज बनाकर अपने क्लासरूम में बहुत अच्छे से उसको एनैक्ट कर सकते हैं. So India is a very, very rich country on techniques and skills. We just need to bring it into the classroom. It's very, very simple to do. When the NEP didn't happen, मैं activities तकरीबन 33 years हो गए मुझे activities करते हुए. मैंने अपना material नहीं बदला, लेकिन मेरी activity range बदल गई. I can do any story, anything through an activity, and I can do it through a very, very simple activity. So therefore, getting the techniques of growing language in your classroom are actually very, very simple. एक सीधी सादी सा तरीका होता है and not difficult at all. अभी तक आपको कुछ भी मुश्किल लगा क्या? तो बस whatever time that you spent with me, and then if you have the music, you have lovely beats. तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ. तो सुनो भाई सुनो एक कहानी लाठी घुंघरू की जुबानी. तो एक झाड़ू थी, वो रहती थी झज्जापुर में. झिलमिल ने झाड़ू को नीचे जोर से पटका, जोर से पटका, जोर से पटका. झाड़ू को लगा बहुत ही झटका, बहुत ही झटका, बहुत ही झटका. झाड़ू ने सोचा मैं झिलमिल के कितने काम आती हूँ, कैसा स्थान पाती हूँ, मैं कैसा स्थान पाती हूँ. चलो मैं छिप जाती हूँ, चलो मैं छिप जाती हूँ. तो झाड़ू छिपी झरोखे के पीछे, झाड़ू छिपी झरोखे के पीछे. दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी सब वहां पर आए. झाड़ू किसी को नजर ना आए. फिर दादाजी को झाड़ू नजर आई. दादाजी ने कहा झाड़ू तुम नीचे आओ, और फिर सबको समझाया कि झाड़ू आती है हमारे कितने काम, जब काम कर ले तो मेरे इस संदूक पे करने दो आराम. और झाड़ू को बड़ा मजा आया, तो उसने चुमक चुमक कर सबको नाच के दिखाया. आपको पता है कि झाड़ू स्त्रीलिंग होती है और पुल्लिंग नहीं होती. किसी ने मुझे बहुत डांट के ये बात समझाई और कहा झाड़ू होता नहीं है, होती है. तब मुझे समझ में आया कि इतने चुपचाप से इतना काम कैसे कर लेती है ना, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे स्त्रीलिंग है. फॉर ऑल द मेन हु आर अटेंडिंग, आप प्लीज सैड ना हो.
अब ये झाड़ू की कहानी है, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा ऐसे बताऊं कि पुलिंग नो जेंडर बायस प्लीज, बुरा ना माने आप. तो इट्स अ स्मॉल लिटिल स्टोरीज, putting up a little stage. All of this is a very, very important aspect of learning and developing language. अब मैं क्या करने वाली हूँ, फोनिक्स को बहुत मुश्किल, एक इतने से टाइम में फोनिक्स नहीं हो पाती, बट मैं क्या करती हूँ, आपको एक जेनरिक प्रोसेस बताती हूँ और 42 साउंड्स और सिंबल्स करवा देती हूँ. सो व्हाट हैपेंस इज कि आपका एक साउंड सिंबल एसोसिएशन हो जाएगा एंड इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कभी भी हिंदी को हम फोनिक्स के साथ नहीं जोड़ेंगे, बिकॉज इट डज नॉट वर्क. What I do with phonics is I start with the alphabet freeze. बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, बच्चों को एबीसी मत सिखाइए, लेकिन हमारा हर बच्चा जो इंडिया में आता है वो एबीसी सीख कर आता है, उसके पास कुछ ना कुछ एक बैकग्राउंड होता है एबीसी का. एंड आई फील just let the children learn the letters, let them know कि these letters have names and they have a sound. Like a dog has a sound that goes bhaw bhaw, a cat has a sound that goes meow. Like that, they are names of letters and they have sounds. So a, b, k, t, f. So don't say the names and the sounds together, but do the indicatives together. यानी आप अपर और लोअर केस को एक साथ दिखाइए, उसके साथ कोई भी alliteration ways to learn phonics. Alliteration means the first word of the first letter sound of every word you speak is of that sound. So Annie ant, Benny bear, cuddly cat, Danny duck, Ellie elephant, Fanny fish, Guinea goat, Hoppity horse, Incy insect, Jimmy jaguar, Kelly kangaroo, Lucky lion, and then the older children can extend it. Lucky lion licks a lollipop. So alliteration is an important part of learning phonics. It's very important. Rhymes are a very important part and stories are a very important part. And then the sound symbol association. Yani, if you show the child this or the upper or the lowercase, the child should be able to say A. So the A, B, C, D is done and over. Once it's over and you've explained it to the children, it's very simple to just show the letter shape and ask them for the sound. 19 letter names hold their own sound. Like A, E, I, O, U are all the long sounds. When you say B, it says B. C is the soft sound. D, D. F, G is the soft sound. H doesn't help us, so we don't use that as an indicator. I, J, J, K, K, L, L, M, N, N, P, P. Q doesn't help us. H doesn't help us. Q doesn't help us. R, R, S, T, U, V, V. W doesn't help us. X, Y doesn't help us, and Z, Z. So 4 letters only don't help us. बाकी सब हमारी बहुत मदद करते हैं. So it is not that they're of no use. And see, there are 26 letters. You teach 2,000 words to children by the time the child is about 4 years old. 2,000 शब्द बच्चे को आते हैं और हम ये 26 letters को सिखाने में इतना सोचते हैं. It is nothing to worry about. Teach them the uppercase, teach them the lowercase, teach them the names, and then when you start the sound, just don't say the names. Then it should be the symbol and the sound. And it works very well with children. And after that, we move them into age trains. So I'm just putting up the trains for you so that, you know, we can do the whole process together. Of course, phonics itni jaldi mein nahi karna chahiye, but thoda sa just to give you an indicative of कैसे हो सकता है and how you can work. So I have हम लोगों के पास एक book है called The World of Phonics, जिसमें हम बहुत details के साथ काम करते हैं और मैं उसका एक आपको I will show you one of the, and as I talk to you I'll play the video. तो मैं जैसे जैसे ये लगाऊंगी एक वीडियो प्ले करती हूँ. So it will help you to see the sound symbol association and see on how you can introduce this and build words. So
बिल्डिंग वर्ड्स के लिए जैसे हम लोग, मैंने आपको टॉकिंग हैंड बोला, like that you can build your words. Suppose I do oral segmenting and blending, यानी आप बच्चों को सिर्फ सुनने को, that is why all this ये जो activities थी ये reading तक आने के लिए थी. So suppose you do oral, suppose the word is sat, suppose I say sat, the child should be able to say sat. Or if I say corn, the child should be able to say k or n. If I say chair, the child should be able to say ch, a, r. So smaller words, bigger words broken up into sound. Now the child grows up even more and the child has to do syllables, यानी एक बड़े से शब्द को breaking it up into parts. Hip, ho, po, ch, mus. तो बच्चा 5 syllable में शब्द पढ़ सकता है. And what is syllable? Syllable are words in which are parts of the word in which there is a vowel. मतलब वो शब्द वैसे टूट सकता है. And then very important to remember that oral segmenting and blending are a technique. ये टेक्निक को बच्चों को सिखाना चाहिए, तब जाके बच्चों को फोनिक सिखाना चाहिए. सीधा a, b, k, d से शुरू कर देते हैं. At the end, the children are so confused. So sight reading is separate when you're doing, and every word cannot be decodable. मतलब इंग्लिश में सारे जो, it's not a pure phonic language. Hindi is a pure phonic language, विशुद्ध ध्वन्यात्मक भाषा, जिसमें जो भी शब्द का उच्चारण वैसा आप शब्द लिख सकते हो. इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, इसलिए हमारी फोनिक नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो बच्चों को साउंड सिंबल एसोसिएशन, एलिट्रेशन, rhyming words, stories, odd one out, same sounds, what is the first sound, 5 words with the first sound, ये सब करने के बाद बच्चा जब तैयार हो जाता है तब जाके उसकी फोनिक्स शुरू होनी चाहिए. So literacy, before your phonics you need to do phonological and phonemic awareness. ये एक बहुत important part है जो इंडिया में बहुत मिस हो जाता है. We don't do it enough. So please think about it. And also phonics should not stop after KG. It should continue up to class 5. Because आपके इतने symbols होते हैं कि आप 42 तो basic sound symbols होते हैं, फिर उसके ऊपर symbols होते हैं और suddenly आप इसको UKG के बाद बंद कर देते हैं. And that's never going to work with children. It has to be done right up to class 5. So phonic lessons should continue up to that level. I'm just doing your pockets for you so that you get an idea on how it's to be done. मैं बहुत जल्दी से एक वीडियो चला देती हूँ और मैं pockets लगा देती हूँ. So what I do is, of course this is a very hurried and I don't know how sensible this is to actually do it like this, but मैं कोशिश करती हूँ कि I'll try, and in the next 5 minutes I'll have to take this out because these cards don't, they need too much of. Also, it very quickly explains to you on how we can change this thing. It will also tell you how we can change the display. It doesn't take much of an effort. This just gets taken out and very easily you take this out, you remove all your material, bundle it up. Activity based learning का एक बहुत important rule होता है, a place for everything and everything back in the place. तो आप इसको rubber bands के साथ bundle कर सकते हैं और इसको आराम से fold करके आप अंदर रख सकते हैं. So this is what you can do with your material. And when you do your 42 sounds, and symbols, you can very easily do it with eight color trains. मैं बहुत जल्दी से trains लगा देती हूँ. And what I do normally is I use these trains for teaching them the 42 sounds. तो पहले हम लोग A to Z बच्चों को करा देते हैं, sounds कराते हैं, symbols कराते हैं, upper case कराते हैं, lower case कराते हैं,
बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं और फिर बच्चों को हम राइम सुनाते हैं, एलिट्रेशन करवाते हैं, फिर फोनिक्स के लिए हम तैयार करते हैं. And we don't take them straight to that. So there is a whole process to what we, create for little children. Or these age trains that I'm putting up are trains that can take your Hindi Varnmala separately and they can take your English as well. Yani agar hum chahe to in trains ko it will take me another 5-6 minutes just to get the shape and the thing right. तो हम इसको इसके जो ट्रेन्स है पहले हम इन्हें हिंदी की ट्रेन्स बनाएंगे, लेकिन हम उसमें फोनिक्स नहीं डालेंगे. जब हम फोनिक्स की ट्रेन बनाएंगे तो उसमें हम हिंदी नहीं डालेंगे. And that's what you have to look at, right? So these are flashcards and these are there's a course of mine called मेरी रेलगाड़ी अक्षरों की दुनिया, ये उधर की रिसोर्सेज है. मैं जल्दी से एक सेट लगा के आपको दिखा देती हूँ, फिर I will tell you how to do the phonic ones. So these are little things we do for creating learning centers for children. तो हम इसमें क से कछुआ धीरे धीरे चलता जाए, कोई इसको रोक ना पाए. क खरगोश बड़ा ही नटखट भागे देखो झटपट झटपट, ग गर्दन को गोल घुमाए ऊपर नीचे दाएं बाएं. तो हम लोगों ने इसमें कलर कोड कर दिया. तो we color coded into 8 pockets. Now the same thing we will do with phonics. So this is a little video which I'll play with you so that you can get all the sound. And this is something which all children for all the classes must learn, because if they can get it right, if they can get the sound symbol right, building of words will become very, very easy and simple. So I'm just as the train will finish, we will. So this is a combination now of digital and hands-on learning, right? So I'm just going to use both for you. And symbols, trains. Pink train. S. A. T. E. P. N. Yellow train. K. K. E. H. R. M. D. Blue train. G. A. L. A. B. Orange train. J. Z. V. W. Y. X. K.
green train, A, E, I, O, U. Dark blue train. Sh. The. Th. Purple train. Ooh. Ooh. Okay, so I will just stop this share and I will very quickly show you the trains over here. So now we have arranged, first you prepared the children. What we were doing earlier were all the techniques for preparation. We were also doing that for our grown-up children where we could bring in different things into the classroom, go from here to here to here, and then build on your fingers. Suppose you want to even build big words like tin, pin, we can, phonics is like a different setup, but this is your sound symbol and your 42 sounds. तो अगर आपने बच्चों को फोनिक्स सिखाना है तो आप उसको ट्रेन्स में डिवाइड करिए, साउंड्स में डिवाइड करिए, सेगमेंटिंग सिखाइए, यानी आप एक शब्द बोलें तो बच्चा तोड़ पाए. Like for example, fan, so and the child is able to pick it up from here. Or chair, sheep, sheep, and then I say sheep, and the child should be able to say sheep. So for today, we just talk about oral segmenting, oral blending, a lot of listening, activities, story time, rhymes, and take the whole lesson together. So I hope you enjoyed the day. I try to make it as crisp as possible. Thank you so much. Good evening. Thank you, Sonia. That was a very interesting session. And whenever we line up your session, at least I try and make sure, including my girls, that, we set aside all work and we are fully there with you. Even though these girls are not teachers, but, we really enjoy because since we engage with the children, you Yes. know, and when they're counseling them, mentoring them, they can also guide the children, Yeah, so for your children, you must have your mood trains there. And these Absolutely. material, ma'am, can be used in any of the classrooms. I just thought this was the best I could put together over this time. Thank you. You remember if you had shared a skit with me in way back in 2005. Okay. I still have that with me. And I also have the moods. Oh God, that's a long time back. Yeah. Yes. Thank you So so we much. now use a lot of work with the folk artists, ma'am. So I went to Neemrana and I couldn't play that today. But if you go to Sonia Relia and you go to the YouTube, you'll be able to see folk artists performing on Indian music. Like, and beautiful stuff. So it's actually stuff which we can bring into our classrooms very easily. And thank you so much to you. And we want to. No, thank you so very much. We are in deep gratitude, Sonia, for the wonderful